Good morning, everyone. Welcome to zBit.com's live on zBit.com, the app, one of the most secure, safest apps on of cryptocurrency. And we are live now on both the platforms on youtube.com live streaming as well as on zBit.com, the app, where you can make trades, where you can earn good amounts of profits, where you find all these crypto coins from Bitcoin to Ethereum to Solana to Dogecoin, all these meme coins, all these altcoins. And I'm here today bringing you one of the most interesting topics today, among all other topics, because the market again, it looks like, has fallen slightly in the last couple of days. Mind you, it is still BTC I'm talking about, is maintaining a position of 70,000 plus, and that looks like that is a almost a 10% improvement since the last week or so. But mind you, it was at 74,000 as well. It did touch 74,000 in the last couple of days during this war between US, Iran, and Israel as well. But it has fallen down and come down to 70,800, and it's maintaining this position. And therefore, it brings me to the topic of the day, which actually is whether Bitcoin is still going through a bearish market or not, right? What is the data saying? What are the indicators pointing towards? क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है, क्यों मार्केट नीचे आई है, क्या मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है, लेवरेज हट रहा है मार्केट से, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आज हम लाइव में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं अपने टेलीग्राम यूजर्स को भी बता दूं कि आई एम लाइव नाउ ऑन zbit.com so that they can also tune in. If you can just give me a minute, I'll just let my team know that I am live on zbit.com. and अगर आप लोगों ने भी अपना मेरा टेलीग्राम फॉलो नहीं करा है, ज्वाइन नहीं करा है चैनल, तो आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सिग्नल शेयर करता हूँ, ट्रेड्स शेयर करता हूँ, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है जो आपको इफेक्ट कर सकता है, आपके ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को इफेक्ट करता है, वो मैं सारी चीजें बताता हूँ। चाहे वो क्लैरिटी एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ईरान यूएस वॉर से रिलेटेड हो, किसी से भी एसोसिएटेड हो, मैं डेफिनेटली उसको ग्रुप पे शेयर करता हूँ अपने, और कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे ट्रेड सिग्नल्स दूं जो 100% श्योर हूं, जिनके बारे में, जिनसे आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाए ज्यादा से ज्यादा, राइट? ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। आज भी ऐसी ही कुछ कोशिश रहेगी, आज भी ट्रेड शेयर करूंगा, ट्रेड करूंगा भी आपके सामने, और साथ ही साथ आज का टॉपिक जो है वो भी डिस्कस करूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान यूएस वॉर में क्या चल रहा है ये भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि भाई मिनट मिनट में खबर आती जा रही है, कुछ ना कुछ बड़े धमाके हो रहे हैं, कुछ एक्सप्लोजन्स की अब खबर आ रही है, कुछ ड्रोन अटैक्स की आ रही है, कुछ वेसल्स को के डूब जाने की खबर आ रही है। यू नो काफी ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं अब इसमें। कतार इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है, एंटायर मिडिल ईस्ट रीजन जितना भी है, बहरीन इन्वॉल्व है, इराक इन्वॉल्व है, काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और इसकी वजह से जो ये पूरी it's a tragedy, if I can say that, right? It's a tragedy that is unfolding right in front of us, and it is just escalating to whole new levels each and every passing day. कब तक चलेगी वॉर, कोई कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। क्या दोबारा डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगी, नहीं होंगी, ये सब देखना पड़ेगा दोनों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज के बीच में। न्यूक्लियर वेपन्स को फिनिश कर देने का जो एक कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, वो कहां तक पहुंचेंगे ये भी कुछ नहीं पता है। मीटिंग्स होंगी दोनों कंट्रीज के बीच में, नहीं होंगी, कहाँ होंगी, कब होंगी, क्या तब तक चीजें एस्केलेट होती चली जाएंगी। क्रिटिसिज्म हर जगह से आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी आ रहा है, इसराइल को भी आ रहा है, ईयू की तरफ से भी आ रहा है, काफी सारे कंट्रीज ने शोक भी जाया करा है। तो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी जिसको हम फॉलो करते रहते हैं लाइव पे, क्योंकि अब वॉर है, ऐसा तो है नहीं कोई छोटी मोटी चीज है, राइट? And it's definitely affecting our markets as well. So we need to keep talking about it because it's a huge matter of concern.
फॉर आवर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्पेशली बिटकॉइन. एंड बिटकॉइन की बात होती है तो फिर इवेंचुअली सारे कॉइन्स इफेक्ट होते ही हैं, राइट? तो वेलकम एवरीवन टू द लाइव स्ट्रीम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. आई विल बी हियर फॉर द नेक्स्ट 4 hours and I'll be hoping that I give you good trades during this live. और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीखें भी इस लाइव सेशन से. और कल भी हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था. मैंने आपको एयर पॉकेट के बारे में बताया था, जो कि लग रहा था कि 72,000 और 80,000 के बीच में जो एयर पॉकेट है, जो बीटीसी को सप्लाई उस बीच में एक्चुअली 72 और 80 के बीच में काफी कम है. तो इसलिए चांसेस थे कि 72 पे अगर रहता है थोड़ा टाइम तो 80,000 पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी. ऑल्दो अगेन व्हेनेवर द मार्केट गोज, अभी तो 70,000 पे आ गई, जब मार्केट दोबारा 72 पे जाएगा तो वो बात वापस से खुल के आ जाएगी. एंड दैट फैक्टर विल अगेन बी यू नो फैक्टर दैट विल बी अफेक्टिंग बिटकॉइन एंड these charts as well, these candles as well. आपको दिख जाएगा 72 से 80 जाने में टाइम नहीं लगे शायद, राइट? On that note, I think I'll start today's trade. I'll make my first trade of the day. I'll open with a long on BTC, और लॉन्ग करते ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया. एनीवे, I have started the first trade of the day. I'll be just logging into my backend so that I can see all the comments that you people have to make on zBit.com. ऐप पे आए हो, डिपॉजिट करके जरूर जाइएगा. ये मैं आपसे एक मेरी इल्तिजा रहती है. और अगर डिपॉजिट नहीं भी कर रहे तो कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग बातचीत नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आप किस तरह के ट्रेड्स ले रहे हैं, आप नए हैं यहाँ पे, पुराने हैं, और आप आपने डिपॉजिट ऑफर लिया है नहीं लिया है, आपने डिपॉजिट करा नहीं किया, ये सारी चीजें मैं नहीं जान पाऊंगा. तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट भी करोगे लाइव में, और कोई सवाल जवाब है तो वो भी पूछोगे, ठीक है? ईरान यूएस वॉर को ट्रैक करते रहेंगे लगातार. यूट्यूब पे अगर बने हुए हो तो भाई यूट्यूब पे भी जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ लेना. काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा आज का, इंसाइटफुल सेशन रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा. आई एम वेरी श्योर. ट्रेड्स भी बताऊंगा, पैसे कमाने के मौके पूरे पूरे होंगे, हम उन पे ध्यान देंगे, ग्रैब करेंगे उन्हें, और साथ ही साथ ट्रेड करते रहेंगे. zbit.com लाइव विद करण मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो वो कर लो. बॉटम पे मोर का ऑप्शन है, मोर दबा के एक बार आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ऑफर सारे वहीं आते हैं, साथ ही साथ ट्रेड भी वहीं देता हूँ, सिग्नल सारे वहीं देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट खबर होती है जो आपके ट्रेड को इफेक्ट कर सकता है वो भी वहीं देता हूँ. तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दैट. जिसने मिस आउट किया वो बाद में जाके पछताया ही है कि सर आपने मेरे को ट्रेड नहीं दिया लाइव पे. मैं कहा भाई मैं ट्रेड देता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूँ, है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है उसको ज्वाइन करना. डोंट मिस आउट ऑन ज्वाइनिंग दैट ग्रुप. इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट. मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, आप लोगों का ही फायदा है. दूसरी बात, जो जो नए यूजर है, डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, जिसने एक बार भी डिपॉजिट नहीं करा है वो लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है? बाद में मत बोलना कि हमें तो डिपॉजिट ऑफर का पता ही नहीं चला, हमें मिला ही नहीं. सुन लो, डिपॉजिट ऑफर चल रहा है अभी. आपको आपके पहले डिपॉजिट पे मेरी तरफ से मिलेंगे 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन, ठीक है? 20,000, दोबारा बता देता हूं, मेरी तरफ से मिलेंगे आपके पहले डिपॉजिट पे 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स. शर्त क्या है वो भी जान लो. शर्त ये है कि आपको मेरे लाइव स्ट्रीम के विंडो के नीचे जो डिपॉजिट ऑप्शन है उसी को टैप करना है, डिपॉजिट करना है. $3 से ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन, ठीक है? ले लेना, क्योंकि ऑफर अभी चल रहा है, जरूरी नहीं है आगे चले. तो भाई मैं बता रहा हूं, बाद में मिस आउट कर दोगे, मुझे मत बताना फिर, ठीक है? अब आपकी मर्जी, आपको लेना है लो. अच्छा, दूसरी बात, डिपॉजिट आप वैसे भी करोगे और ऐसे भी करोगे, है ना? आए हो तो डिपॉजिट तो करोगे ही कभी ना कभी, है ना? ट्रेड करना है तो डिपॉजिट तो करोगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है डिपॉजिट करोगे ही करोगे. तो भाई डिपॉजिट ऑफर ले लो, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल 300 रुपए डाले, आपको 300 के 300 ही दिखाई देगा. वरना डिपॉजिट ऑफर को यूज करोगे तो शिबा इनू कॉइन्स और पेपे कॉइन भी साथ में फ्री मिलेंगे, तो लेना मत भूलना, ठीक है? ओके,
ये बताना इंपॉर्टेंट था, बता दिया। यूजर 863834 बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे लाइव स्ट्रीम पे थोड़े 4-5 मिनट पहले से जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। क्या आपने डिपॉजिट करा अपना पहला zbit.com पे? एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूं कि मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। ETH has broken the above descending trend line and claimed short-term structure after a strong bounce from a shift in momentum price. Which is the immediate key level to watch out. Watch a clean breakout and hold above 2150. Open the path over 233. एक बार ETH को देखना चाहूंगा मैं, क्योंकि ETH ऐसा लग रहा है कि 2100 तक जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म पे आई रियली फील दैट दिस कुड वेरी वेल बी अ ब्रेकआउट टिल 2150, एंड 2150 तक अगर जाता है तो फिर देयर कुड बी अ path that opens up around the 2300 to 2470 price point as well. अगर रिजेक्शन आता है तो इट कुड वेरी वेल कम बैक टू 2000, बट राइट नाउ आई थिंक आई कैन प्लेस अ बेट हियर एंड आई कैन बी बुलिश ऑन BTC, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट सेकंड ट्रेड ऑफ द डे। पहला BTC में डाले हैं ऑब्वियसली, 7959 में करा है। आई हैव बीन बुलिश ऑन बोथ द कॉइन्स और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी ज्वाइन कर लो ये ट्रेड। राइट, यूजर 868341 बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। आप थोड़ी देर से बने हुए हैं हमारे साथ। आज का पर्टिकुलरली टॉपिक जो है वो है क्या BTC अभी भी बेरिश मार्केट में है। एक $2 का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मेनली बिकॉज दोनों ETH और BTC थोड़े थोड़े से ऊपर गए हैं। 40x का लेवरेज मेरा ETH पे लगा हुआ है और साथ ही साथ BTC पे मेरा 40x का इस पे भी लगा है। 71,000 टच कर दिया है फाइनली BTC ने लास्ट कपल ऑफ आवर्स से। ये शुभांगी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लास्ट कपल ऑफ आवर्स से ये 71,000 के नीचे ही था
अब it's going up. I feel like it could go slightly up. ETH पे I would recommend you to start trading because there is a high tendency it could go towards the 2150 mark, right? So please pay close attention to ETH, right? The bond market isn't convinced. तो टू थोड़ा सा ऊपर नीचे जाती दिख रही है मार्केट। स्टेबिलिटी थोड़ी सी मार्केट में देखने को मिली है इन द लास्ट कपल ऑफ आवर्स, लास्ट कपल ऑफ आप अगर देखो कि लास्ट 4 आवर्स में लोएस्ट जो है ये 2058 तक गया है। बीटीसी को देखना चाहूंगा मैं एक बार। लास्ट 4 आवर्स में लोएस्ट 7100 तक गया है और हाईएस्ट जो है ये गया है 71081 तक। बट अभी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है मुझे। इट हैज कम टिल द 71,000 मार्क एज वेल। थोड़ी देर पहले तक नहीं था वहां पे, अब बढ़ रहा है। शुभांगी जी, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। Also user 868341, if you're listening to me, do make sure that you come here and make some kind of comment, because उससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है और टू वे कम्युनिकेशन लगता है। आपके कोई सवाल है, जवाब है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। यार कल नुकसान हो गया थोड़ा। ओ, लुक्स लाइक आपने कल ट्रेड अपना क्लोज नहीं करा होगा, दैट इज वाई आपको नुकसान हो गया। अब बताओ बीटीसी का हाई या लो। आज आई वुड सजेस्ट आप बीटीसी की जगह अगर आप इथीरियम पे ट्राई करें एक बेट, तो आप कर सकते हैं। यू कैन एंटर नाउ, एंटर नाउ। बुलिश रखना, आप ऊपर जाएगा मुझे ऐसा लगता है 2150 की तरफ ये जा सकता है। तो अगर जाता है तो इथीरियम आप यूज़ कर सकते हैं, हाई और लो। इथीरियम विल गो अपवर्ड्स, दैट इज़ व्हाट आई थिंक, राइट। अगर कोई पर्टिकुलरली ट्रेड मेरे को दिखाई देता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर दीज सिग्नल्स ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। zbit.com लाइव विद करण मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे ग्रुप ज्वाइन करवाइए आप। उसके वजह से उनको ही बेनिफिट होगा इवेंचुअली। और वो एक बार ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनको आप बताइए कि मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे सिग्नल शेयर करता हूँ, ट्रेड्स शेयर करता हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो उसको मैं देखता हूँ। टॉप नॉच सर्विस देने की कोशिश करते हैं हम अपने प्रीमियम यूजर्स को बेसिकली, और एक स्टेप आगे जाके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी क्वेरी रिगार्डिंग डिपॉजिट विड्रॉल, कोई एक्सक्लूसिव ऑफर चाहिए तो हम उनको वहां शेयर करते हैं, राइट। तो ये टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर पीपल आर ज्वाइनिंग इन। बिटकॉइन रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, साथ साथ जानेंगे पढ़ेंगे क्या क्या चल रहा है। ये देखो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। द सीक्रेट लूपहोल हेल्पिंग ईरान फायर मिसाइल्स एट इजराइल एंड यूएस विदाउट गोइंग ब्रोक। ठीक है, क्या है वो? ईरान की करेंसी तो देखो कोलैप्स कर रही है, रियाल की वैल्यू गिरती ही चली जा रही है, राइट। ये तो सब आप जानते ही होंगे, राइट। लेकिन 2085 पर इन किया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। होपफुली इट विल गो अप, यू विल जस्ट हैव टू बी वेरी पेशेंट। I welcome user 260841 and user 705060 from the beautiful country of Nigeria. Thank you for joining in. I welcome user 418831. ये देखो भाई, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इंग्लिश में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नाइजीरिया से कुछ लोग जुड़ गए हैं।
A very interesting article you can see here. The secret loophole helping Iran fire missiles at Israel and US without going broke. What is it all about? Hello. Very nice to see you here. Thank you for commenting as well. I hope you are, if you are a new depositor, you have made most of the deposit offer. I'll just let you know what the deposit offer is. Then I will talk about this particular article. Now, the deposit offer is that you will get from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free on your first deposit, right? When you make your first deposit, you will get from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free. The trick here is you have to only use the deposit option right below my live stream window, right? At the right bottom, you will see a deposit option. So tap on that and make a $3 or more deposit, and then only I can give you 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins. Now I know that $3 is not a very big amount as well. It's a very nominal amount, very reasonable amount, and it's there to help you motivate to join some trades, make some trades, get your crypto journey started on zbit.com, right? Please make sure that you take this offer, because otherwise if you deposit, it's not necessary that you will get this offer. You will only get this offer from my side, and you can't get this anywhere else on the app. You won't be able even to see this, right? So I can give you from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins, provided you tap on the below deposit option. Also, if you've not joined my Telegram group, right? User 705060 from Nigeria, I would love to know your name first of all. If you've not joined my Telegram group, please do join it. Right at the bottom, you will see an option of more, right? Tap on more, and then you will see the option of join Telegram group. Join my Telegram group. There I share trade signals and, good trades that will eventually help you make more money. So make sure you've joined it. And I also share exclusive offers over there. I'm new to trading, sir. I'm interested in learning more. Yeah, absolutely. I'm here to help you, guide you. Provided I'll only be able to help because only and only after you join my Telegram group. Because otherwise, it will be very difficult for me to, keep track of how my, my family, my trade family, my Telegram family is doing. Right? On my your name is Engineer Abdullahi. Yeah. So. Abdullahi, please, make sure you've joined my Telegram group. Right at the bottom, you will see the option of more. Tap on more, join my Telegram group, and just let me know once you've joined it, right? It's yeah, so it's by the name of zbit.com live with Karan. Make sure you've joined it, and when you've joined it, just let me know that you have joined it, right? So I'll be able to see that one of my users has joined it and is ready to learn something, right? Okay, sir, but I don't have the Telegram group. Yeah, the Telegram group link is, that's what I'm telling you, right? Right at the bottom, there is this option of more, right? Do you see more? Tap on more, and then you will see the option of join Telegram group, right? Let me know when once you've joined it. Yeah, there I share trade signals. I help you understand trade. I help you understand futures trading. I welcome user 967250 as well to the live stream. Thank you for joining in. I hope you become part of my Telegram group, because it's one place that you should definitely not miss out. I have my own Telegram family over there. I share all the trades over there. I share all the latest info related to cryptocurrency, how it can help you, how it can help you make better trades, earn more profits, bigger profits, right? So, Abdullah, just let me know once you've joined my Telegram group. Yeah.
So Prince Abdullah, thank you for joining in on my Telegram group. I can now see that you have joined. You are my 98th member of my Telegram group, right? I'm very fast and very soon about to reach the 100 mark, right? And now that you've joined, I'll just let you know what futures trading is all about, right? Do you want to know what futures trading is all about? What does zBit actually do? Do you want to know what futures trading is all about? Do you want to learn? So Abdullah, are you listening? Because I will also let you know the deposit offer. I don't want you to miss out on that because since you're a new joinee, new depositor, you can definitely make your first deposit as well, right? I've obviously told you about the deposit offer that is currently live on zbit.com, and that is what I can give you from my end right now, right? Still waiting for Abdullah's comment. If he wants to make most use of the deposit offer, I can just let him know once. Anyway, I'll first go read this particular article. Iran's currency is collapsing, its economy is under crushing sanctions. All right, I think I do have my first trade of the day that I can share with all of you people on Telegram. Give me a minute. So my first signal of the day is very soon going to come on Telegram. I hope that you people are tuned in, and it's going to be on XAU. That is why I've opened it, and I will look to myself place a bid here. Five one two five 5125 and 5128 5128, right? And still I'm going to set at right. So I'm going to be sharing my first trade of the day. Just give me a second. It's on XAU, and I'm sharing this trade on my Telegram group. Just give me a second. Now, Shubhangi, if you are looking at this trade, you can enter XAU and you can open long.
I will definitely share this on my Telegram group. My first trade of the day is on XAU, right? All right, I will just first share the trade here. And first signal of the day, you can open long on XAU. I hope you people are taking this trade because it is obviously the first trade of the day. I myself entered this trade and I'm hoping that it'll go towards a higher amount. Right. Uh, right. Thank you for joining. I'm on work call. We'll get back to watch it soon. 100% no issues. Uh, User 522982, thank you for joining in. And as well as first trade of the day share कर दिया user 705060 बहुत बहुत स्वागत है. 868341, you've been here since a long time. Shubhangi, thank you for joining in. And all those people who are joined on my Telegram group, if you've not joined it, kindly go ahead and join it, because on that group I've shared the first trade of the day. It's on XAU as well. Good evening to user 490927. Sorry, I've been replying late. Good evening to nahi. It's almost afternoon here right now. So a very good afternoon to you from my side. एंड आप लोगों को बस एक बार ये बता दूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहा था. पहला ट्रेड ऑफ द डे मैंने शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप पे. जिसने ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू ज्वाइन इट. एंड देयर इज अ डिपॉजिट ऑफर रनिंग एज वेल. आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट द डिपॉजिट ऑफर इज. You will get from my side on your first deposit on zbit.com 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free of cost, right? Now you don't have to do much for that. You don't have to do anything extra, anything big. You just have to make a minimum $3 deposit by using the below deposit option only, right? Now if once you do that, you will get from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins. Don't miss out on this offer, because a lot of people tend to miss out on this offer because only I can give you this offer on live stream, right? So make sure you've joined it. User 856326, again from the amazing beautiful country of Nigeria, has joined in. Thank you for joining in, brother. I hope you are not missing out on the deposit offer that I've just told. You can get from my side. I'll just repeat it. You can get from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins on your first deposit. This is only for people who are making their first deposit, right? So please make sure you use the below deposit option to join, and you also join my Telegram group. If you tap on more and if you tap on join Telegram group, you'll reach my Telegram group. It's by the name of zbit.com live with Karan, right? Now I'm going to get back to reading this particular article about the, it's interesting, very interesting. It's about the secret loophole helping Iran fire missiles at Israel and US without going broke, right? What is that secret loophole? We are going to be figuring it out right now. Iran's currency is collapsing, right? We all know that. Riyal ki value girti chali ja rahi hai. Its economy is under crushing sanctions, yet Tehran is still paying for machinery, fuel, military components abroad using a financial rail Donald Trump cannot control. The workaround is simple: mine Bitcoin and then spend it. Iran can mine a single Bitcoin for roughly $1,300. With Bitcoin trading nearly at $73,000, that creates a 71,700 margin per coin. That value can be deployed outside the global banking system. That strategy quietly punches a hole through the sanctions architecture of the US spent 2 decades building, right? Now, the thing is, Iran has the capability to mine BTC, right? Now, the only way these minings of BTC will be affected will be through
if there is some kind of an infrastructural damage to all these computers, because obviously mining requires big computers, big machinery, and a lot of electricity as well. So unless there is a power cut, power failure, grid failure in Iran, or because of some kind of an airstrike or any kind of bombings or any kind of a drone attack, whatever, only then will this uh, you know uh, you know this funding that they are getting from BTC will be coming downwards. Right now, we've seen how in the past countries have switched to BTC in times of crisis, right? In countries that are actually in economical turmoil, we have seen how BTC tends to rescue them somehow, right? And all Iranians now feel like they can use Bitcoin to work their way around during times like these, when the value of their currency has dropped like crazy, right? The value of real has fallen down massively in the last couple of months. And obviously, what the United States has done is to somehow choke Iran of the finances that used to enter their markets. They also put United States also put sanctions and what do you call it, tariffs on countries that were trading with Iran. So eventually the number of the amount of money that was coming into their economy has come down as well. And during times like these, we've seen how Iranians have switched to Bitcoin and cryptocurrency. We've read and we've discussed this a lot in the last couple of days as well, regarding this specific aspect of BTC. And therefore, Iran is not the only country exploiting crypto's loopholes. Russia has done that, North Korea has done that, and now Iran is doing that. So, three adversaries, three different methods, but the same strategic conclusion remains. The global sanction system built around the dollar has a blockchain shaped gap, and America's rivals are moving through it, right? What's important is to understand also the fact that now I told you all to take this trade. I told you all to enter at 5115. Now it's going up, and it's gone to 5119. I'm sure you are making some kind of profits. I don't know why I'm not making that much profit. Maybe my leverage is less. Okay, my entry price is actually 5118. I expected that it was actually 5115. So no worries. I'll just wait and hope that things will get better. I also hope that Ethereum will, go upwards as well in the next couple of minutes. But mainly, guys, BTC, right? BTC is one coin जिसके बारे में आपको जितना आप पढ़ो जानो, डेटा देखो, historical patterns देखो, indicators देखो, वो कम है, right? It's important that you keep a track of BTC, because ultimately all other coins depend on how BTC is eventually performing, right? Directly or indirectly, it does affect all these coins. So when I joined this live, BTC was at the 7800 mark. Now it is at the 7900 mark. It did go above 71,000 as well. As you can see, in the last 60 minutes, it has gone to the highest it has gone to is 7135 as well. So it's hovering around this very spot. We'll keep a track of it, and we'll hope that it does go up in the next few minutes, although it looks like it's coming down rather. So we'll keep a good eye on it. Yeah, so Abdullah, have you made your first deposit yet on zbit.com?
Abdullahi, Prince Abdullahi, thank you for joining in on my live stream on my Telegram group as well. But uh, have you made your first deposit yet on zbit.com? Now I'm going to be monitoring a few trades as well that I have made myself in the last couple of minutes on zbit app. I will, Abdullah, if you are listening, do you want me to explain how to do futures trading, how you can earn money through futures trading? Also, Shubhangi, are you on this live right now? Are you listening to what I'm trying to say here? I am having an $8 loss right now, which is hurting, but uh, I will look to, cover these losses in the next couple of hours. Obviously, I'm not here for a short period of time. I'm here for a long period of time. I'll be here for the next 4 hours as well. So I'll be hoping to guide you and make more profits as well in the meantime. If you want, I'll also look at percentage changes as well in the last couple of minutes, right? At USDT has seen a 4% change. If you see in the last 30 minutes, it has gone up. So I think I could enter this trade and hope that it does well. 0.00699. Oh my god, it has risen quite a lot, right? I am hoping to make a. That's not happening. So I'll enter at 0.07015, right? Or maybe 7023. 18 5 is right. And, right, so I've opened a trade, but it'll only be getting into a position when it reaches the 7015 spot. Only then it'll come into the positions window. I'm hoping that that happens very fast, very soon. Although it doesn't look like it's going upwards only, so I don't think it'll come back to 7015. If it does, it'll be good only, but I don't think it'll happen. Yeah, I don't think that it'll come down to 7015 as well. Now, for those of you who have not joined my Telegram group, you're surely missing out on a lot of good, trades, as well as a lot of good updates regarding exclusive offers. So my trade didn't open, so I'll obviously put it on cancel now. I'll just refresh my screen once more. And looks like the only way it's going is upwards. 7050 entry, they think. But again, it'll have to come to 7. It has come to, but
Again, my order hasn't come to the positions option, so I'm hoping that it does open, because market order पे मैं place कर नहीं पा रहा हूँ. इसको भी cancel करके. राइट, बाकी भी देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रेड किस में, परसेंटेज चेंज किस किस में देखने को मिल रहा है. IMX USDT पे भी है, पॉपकैट USD पे भी है. आई थिंक आई कैन एंटर दिस ट्रेड. और IMX USDT पे भी है. मैं सब पे बुलिश ही रहा हूँ बाय द वे. लास्ट 30 मिनट्स में आई एम नॉट श्योर अबाउट IMX. IP USDT again, last 30 minutes hasn't been that good. Lune USDT last 30 minutes has been decent. Right. So, all of you people who are joined in on my live stream, are you looking at the Iran Israel war as well and how it is transpiring? Because the impact of it can be seen on the crypto markets as well. Today the market has obviously slipped a bit. It has come down from, a position of 72, 73,000 BTC to around the 70,000 mark. Now there is a technical glitch at my end on the jump server, which I'm looking to sort out. All my profits are right now in negative. All my trades are in negative at this point in time. But again, I will have to wait and see how they perform in the next couple of minutes. I'll be keeping a close eye. Patience look is the name of the game in cryptocurrency, because unless you keep patience, you will obviously feel like your trade has gone into negative, and you can have bad thoughts about it. You can panic a bit. It's important that you make sure that you are patient enough and wait for the market to go upwards. And then obviously I'm seeing a $10 loss, right? You can see on my screen, but that doesn't mean that it'll be there forever, right? It'll improve and it'll get into some kind of a positive response as well. I'm having some technical difficulty here at this point in time. I'm looking to sort it out. Let's hope that it gets sorted out sooner rather than later, because I'm not able to see all your comments because of this technical issue at my end. So we've read about this article, the secret loophole that's driving Iran to actually fund their, machinery, their fuel, and all the stuff that's needed during a war against Israel and the United States. We'll also read about more Bitcoin related stuff. Bitcoin breakout faces a huge hurdle, this article says. What is that huge hurdle? Let's just go and read this article until this technical issue is sorted out from my end.
I'm looking to sort this issue out from my end. I've just had a word with my support team as well regarding it. Let's hope that it is sorted out. Meanwhile, until then, if you have any questions, you can ask me. I will try and read about it from your say something boxes where you can type in your question and I will look to answer it. Right. I've been here since the last 50 minutes. I hope that I'm not boring you. If anyone has a doubt or a query on YouTube as well, you can go ahead and ask me. I don't know what's happened to my hair here, but right. So, if any one of you has any questions regarding BTC, regarding the Iran US war, you can go ahead and ask me on the chat window below where it says say something, right? Chat box. All right. I think there is a slight issue at my end. I'm looking to sort it out, but actually, that's not happening. Right. So just give me a few minutes. I'll look to sort this out. Uh, I am having a technical difficulty at my end, and I will look to sort this thing out before it gets. I am looking to sort it out. Just give me a few minutes. Right. I am having some technical difficulties at my end, and I'm looking to sort this out as soon as possible. Just be with me during this period while I sort this thing out. Hmm. Just give me a few minutes. I will look to sort this thing out.
Just give me a few minutes. I'm looking to sort out a technical difficulty at my end. And once it's sorted out, I'll just let you know. I am having troubles with seeing all your comments that you are actually posting here. And that is why I am looking to sort it out once and for all. But I'm afraid that you'll have to give me some amount of time before I do that. I am facing some kind of difficulties with my server here, and that is why I'm looking to sort it out. Just kindly give me a few minutes before I sort it out and get back to solving all your queries, getting back to the topic of the day, and doing more trades as well. Right?
Right, I think it's going to take a longer period of time before I join in on and solve this query out. Uh, I will look to sort it out probably by the end of this live stream. I'll constantly keep a track of all of you people who are joining in on the live stream, but I actually will not be able to, look at all the numbers that I have on my live stream, as well as all the people who are, placing their questions as well. I won't be able to get their usernames as well, but I will look to sort this out as soon as this live is over. Probably I will be having this issue right till today. Just give me a minute, I'm looking to sort a few things out at my end. Just give me a few minutes. Just give me a few minutes, I'm looking to sort this issue out.
I'm afraid quite a few issues that I am, going having right now. Just wait till I sort this out, and once it is sorted out, I will look to get back to our live stream because right. I think I have now sorted this out. Just give me 1 minute. I will be back on the live stream. 998 352. Right. I seem to have sorted this thing out, and I hope that I'm very sorry for all the inconvenience that I've caused in the last few minutes. But actually, I was not able to see all the comments that you people are going to make on the live stream, and that is of vital importance because only then will I be able to answer all the questions that you people have. So, thank you for bearing with me. Thank you for still staying here. I will look to now answer all the questions. 93869. Looks like it's still not sorted out this thing. Just give me a few minutes. I'm still not over this problem, I think. Right. I am actually not able to see all the comments that you people are making because of the issue that I am facing right now. So I'm really sorry for all the inconvenience that is being caused because of this, but it is of vital importance. That is, I need to get it sorted ASAP. And I'm also, you know, getting a loss here that I can.
Please. Right. Right, then finally I have sorted this thing out, and I hope that now I will not have to encounter this trouble. I'm really sorry for all the inconvenience that this has caused in the last couple of minutes. There was some technical issues at my end. Technical issue at my end. I welcome user 261462. You've been the last 4 minutes, and user 490927. Thank you for being on my live. राइट, तो काफी चीजों के बारे में बात करना है। ये थोड़ा देर ये सारी चीजें सॉर्ट करने में चला गया, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो बीटीसी का प्राइस जो है वो गिरा है। तो क्या वो ये दर्शाता है कि अभी भी हम एक बेरिश मार्केट में हैं या नहीं? ये आज का टॉपिक है, और ये आज के टॉपिक को हम लगातार देखते रहेंगे। जो जो लोग यूट्यूब पे बने हैं वो भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई एम सॉरी ये जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए। आई वाज लुकिंग टू सॉर्ट अ फ्यू थिंग्स आउट हियर। अगर आप लोगों ने डिपॉजिट नहीं करा है तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। डिपॉजिट करने के लिए जो डिपॉजिट ऑप्शन है आपको नीचे वाला यूज करना है, मेरे लाइव स्ट्रीम विंडो के नीचे। अगर नए डिपॉजिटर हो तो प्लीज उसको यूज करना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप पे भी किसी का मैसेज आया था, हाय आया था। हाय तो भाई हाय को क्या बोले हम, हाय। राइट। काफ़ी डिफिकल्टी हुई इसको सॉर्ट आउट करने में, फाइनली सॉर्ट आउट हो गया है। सारे पोजीशंस ओपन हैं एट यूएसडीटी, एक्सएयू, ईटीएच, बीटीसी सब में ओपन है, और $6 का प्रॉफिट जो है, $5 का प्रॉफिट जो है एट यूएसडीटी दे रहा है, और एक्सएयू जो है वो थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है अभी। लेकिन आई थिंक इट हैज रन इट्स कोर्स। मैंने बंद नहीं कर पाया हूँ मैं इस ट्रेड को, तो अब मैं इसको कोशिश करूंगा बंद कर दूं, क्योंकि क्लोज नहीं करा ट्रेड तो लॉस और बढ़ सकता है। पॉपकैट यूएसडीटी पे भी मैंने ट्रेड करा है, पहली बार मैंने पॉपकैट यूएसडीटी में करा है। आई वेलकम यूजर 412530, बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे। इथीरियम को 2084 पे एंटर करा है, लेकिन इथीरियम 2077 तक चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं जाता है। 5118 पे मैंने इसको एंटर करा है। ओके, एक बुलिश रन की ज़रूरत है बीटीसी की, सब कुछ ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। वेट करना है बस, बीटीसी 71,000 को पार करे, 71.5 तक जाए, सब कुछ बढ़ता दिखाई देगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। 20 डॉलर का लॉस दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन एक बार बीटीसी ऊपर जाएगा तो सारे ऊपर जाएंगे इवेंचुअली। थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे, और फिर ट्रेड्स आगे पकड़ेंगे। एनीवे,
At the very least, the bears appear to have lost control, leaving the market sending a broadly neutral message to traders. Keep an open mind on directional risks while the price sits near such an important level, right? Very important. uh, it looks like the market has gotten into a neutral phase for some period of time. I welcome user 140592 from Nigeria. Thank you for joining in on my live stream. If you're a new depositor and you're new to cryptocurrency or you're new to zbit.com, I have a deposit offer for you. You can get on your first deposit 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free, right? Patience is the name of the game. Patience is the name of the game. Just wait and hope that things get better in the next few minutes with BTC going upwards, obviously, because that is going to create the most, you know, percentage change in the market. और भी coins देखेंगे जिसमें percentage change आया है. याद रखना एक वॉर चल रही है तो वॉर के टाइम पे भी मार्केट जो है वो वोलेटाइल होती है बहुत ज़्यादा. और ऐसे टाइम पे कई लोग रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम डूइंग ट्रेड्स, राइट. इट्स important that you don't make trades just for the sake of it. You make trades, you make trades with some concrete, evidence of it doing well or doing whatever, of falling, even in whatever you make a decision of, that should be firm and should be backed by some kind of evidence, some kind of clarity. वरना ट्रेड अगर गलत गया तो वॉर के टाइम में काफी गलत हो सकता है वो. और वोलेटाइल मार्केट है, doesn't necessarily it will react, in the manner that you expect it to. That is why people do set stop losses, people do set take profits. ये सारी चीजें तभी वहीं वाइटल होती हैं, काम आ जाती हैं, राइट. यूजर 544577 बहुत बहुत स्वागत है. ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट 4 people सस्पेक्टेड ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान. Missiles interceptions above Tel Aviv. 5 miles, 5 missiles intercepted. 52 French ships stuck in the Gulf. Lufthansa warns of heightened uncertainty. Death toll in Iran reaches 1332. That is the impact that a war has, right? Since Saturday, 1,332 people have lost their lives in Iran,
and have been killed by the US or the Israeli forces. Huge loss again, but you know, that's what a war brings with it, right? Sri Lanka's president urges peace, ready to aid every step towards ending hostilities. Never mind. ट्रेड्स पे आएंगे वापस. मार्केट्स जो है ना वो थोड़ी बहुत स्टेबलाइज होती दिखाई दे रही हैं, तभी लॉस भी है जो वो बढ़ नहीं रहा है, और फायदा भी है वो हो नहीं रहा है. तो थोड़ा स्टेबलाइज हुई हैं, ऑब्वियसली थोड़ा लोअर देन वेयर आई एंटर्ड इन. But if BTC goes up, obviously there are big chances that other coins will go up along with it. So we will have to constantly track BTC. And I've been here since the last 1.5 hours. I'll just take a short break, and when I come back, I will look at all the, you know, uh, trades that I have taken. Hopefully ये portfolio थोड़ा better दिखेगा, balance थोड़ा better दिखेगा, positive में दिखेगा, और इवेंचुअली मैं होप करता हूँ कि हम पॉजिटिव ट्रेड्स भी करेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, राइट? So I'll take a short break. I'll be back in the next few minutes. Till then, stay tuned only on zbit.com live with Karan, right? BTC तो गिरता ही दिखाई दे रहा है, और a push towards the 71,000 mark is needed. Thank you for joining in, user 260841 and user 111086 from Indonesia. Thank you for joining in. We are continuously looking at the price of BTC and Ethereum and 3 4 other altcoins as well, in which I have made trades. All of them are currently going through a short, small loss, but that's okay. We will hopefully, wait and keep an eye on it, and hopefully they'll come up in the next few minutes. Just need a push from BTC. सुमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में. हरेन, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, ऑल ऑफ यू पीपल, एंड आई होप दैट यू ऑल आर कीपिंग गुड ट्रैक ऑफ. सुमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है दोबारा, आप इंडिया से हैं. उम्मीद करता हूं कि आप बीटीसी को ट्रैक कर रहे हैं, यूएस ईरान वॉर को भी ट्रैक करते हैं. बहुत बहुत हेलो. सबसे बड़ी बात पहली बात, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. कैसे चल रहे हैं आप लोगों के ट्रेड्स? क्या लगता है, बीटीसी गिरेगा यहाँ से या उठेगा? क्या लगता है, will BTC fall or will BTC rise towards 72,000 73,000 again? What do you think? क्या लगता है? डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है बाय द वे. जिसको नहीं पता है एक बार बता देता हूं. मेरी तरफ से आपको आपके पहले डिपॉजिट पे मिलेंगे 20,000 पेपे कॉइन्स या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स. ठीक है, मिस मत करना इसे. इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग मिस कर देते हैं. शर्त क्या है, डिपॉजिट ऑप्शन जो है मेरे ठीक नीचे बॉटम पे जो है, बॉटम राइट पे लाइव विंडो के, उसको यूज करना है. दूसरी बात, $3 का मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए डिपॉजिट के लिए. अगर वो नहीं है, वो कम है, रीजनेबल अमाउंट है मेरे ख्याल से, नॉमिनल अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सब कर सकते हैं इतना. ठीक है, तो $3 मिनिमम अमाउंट है. जैसे ही डिपॉजिट कर लो, पहला अपना मुझे बता देना, मेरी सपोर्ट टीम आपके अकाउंट में 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स डाल देगी. दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने मेरा लाइव स्ट्रीम मेरी लाइव स्ट्रीम पे आए हुए हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, वो भी कर लो. वहां पर लेटेस्ट ट्रेड सिग्नल शेयर करता हूं. अभी करा था थोड़ी देर पहले एक्सयू रिलेटेड. साथ ही साथ मैं वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, कुछ भी होता है, एनीथिंग दैट कुड अफेक्ट योर ट्रेड्स, दैट कुड अफेक्ट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बीटीसी, इथेरियम, किसी को भी अफेक्ट करता है तो मैं बताता हूं. तो उसको ज्वाइन कर लो. मोर का ऑप्शन है, मोर पे टैप करके एक बार ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो zbit.com live with Karan मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको ज्वाइन कर लेना, मिस मत करना.
क्योंकि वहां पर सारे ट्रेड सिग्नल शेयर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ज्वाइन कर लेंगे। सुमित सिंह जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? क्या आपने कोई ट्रेड लिया आज zbit.com पे? यूजर 260841, आप भी बहुत देर से लाइव स्ट्रीम पे बने हुए हैं। क्या आपने कोई भी ट्रेड आज लिया zbit.com पे? कैसे रहे हैं आपके ट्रेड्स? क्या लगता है बीटीसी कहां तक जाएगा गाइस? यूजर 755199 ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन माय लाइव स्ट्रीम। किकिश जे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन 10308। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस ऑन माय लाइव स्ट्रीम। हम आज देख रहे हैं कि बीटीसी जो है, क्या अभी भी वो बेरिश मार्केट में चल रहा है? वॉर के दौरान हमने देखा था कि बीटीसी जो है बहुत टाइम से जिस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था उसको तोड़ के 74,000 तक भी गया था। ये देखो, अगर आप 1 वीक पीरियड में हाईएस्ट देखोगे 74,027 तक भी गया है, पर फिर वहां से वापस आया है, 72 73 मेंटेन कर रहा था। अब कल के दिन में वापस रात तक अगर आप देखें तो 70,000 के आसपास आके रह गया है। Now, does it mean that BTC is still in a bearish market? That is what we are discussing today, right? We are reading different perspectives, understanding data, understanding indicators, और साथ ही साथ ट्रेड्स भी कर रहा हूँ और ईरान यूएस वॉर के बारे में भी आपको बता रहा हूँ क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, कब तक वॉर और चल सकती है। ठीक है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है यूएस की तरफ से, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं ईरान और इसराइल की तरफ से, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, डिपॉजिट ऑफर जिसने नहीं लिया वो ले सकता है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो भी कर सकता है। टेली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मोर का ऑप्शन नीचे है, टैप करो, ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप। लेटेस्ट सिग्नल सारे वहीं शेयर करता हूँ, वहीं करता रहूंगा। उसको ज्वाइन कर लेना, मिस मत करना, फायदे में रहोगे ज्वाइन कर लोगे तो। मुझे पता है मार्केट जो है वो, मेरा लॉस जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बट मैं थोड़ा सा पेशेंस और रखूंगा। आई विल वेट फॉर इट टू गेट टू द पॉजिटिव साइड, तब मैं जाके इसको क्लोज करूंगा ट्रेड को। ये एक कॉइन का कोई वो नहीं है, काफ़ी सारे कॉइन्स में लगाए हुए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही बीटीसी थोड़ा ऊपर जाएगा, मान लो ये 71,000 71,500 तक भी अगर जाता है, तो ये जो है सारा लॉस कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना। हालांकि बीटीसी गिरता जा रहा है थोड़ा 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 करके, लेकिन बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और क्रिटिकल फेज है ये, और यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है 65,000 की तरफ, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखेंगे, इतना बड़ा कोई लॉस भी नहीं है। Patience is the name of the game here. On that note, I'll take a short break. When I come back, I will look at these trades. I hope that they'll get to, into a positive uh, showing, and I'll also look at what's happening in the Iran-US war. Apart from that, more news articles, more latest articles regarding cryptocurrency, of what's going on in the market, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई किसी के सवाल हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। लाइव स्ट्रीम विंडो पे नीचे से समथिंग का ऑप्शन है, वो किसी पर्पस के लिए है, तो आए हो तो कुछ सवाल जवाब पूछ के ज़रूर जाना, वरना कोई ऐसा लगेगा ही नहीं कि आए थे, ऐसे लग रहा है वन वे कम्युनिकेशन है ना। तो प्लीज़ अपने सवाल जवाब ज़रूर पूछ लेना आए हो तो। I'll wait, I'll come back, I'll take a short break. Don't go anywhere. Stay tuned only on zbit.com live with Karan, right? Don't go anywhere.
Welcome back to the live session. राइट, लॉस जो है थोड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है. BTC, therefore, it does look like has fallen a lot in the last couple of minutes, and it's falling further and further as well. But we'll wait and hope that the market does get to correct itself in the next couple of minutes or so. And if there are more signals, I'll definitely share it on my Telegram group as well. BTC is looking to maintain itself in and above.
हो गया लॉस। शिवांगी जी, लॉस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस cryptocurrency markets. I am myself going through a $65 loss. You can see on my screen. But welcome user 206116 to the live stream. Hope you are constantly keeping track of Bitcoin and the way it's falling down in the last couple of minutes. Looks like it's looking to maintain the 70,000 barrier. User 206116 from the United Arab Emirates, hoping that things are fine in the United Arab Emirates, in Dubai especially. BTC की मार्केट आप देख सकते हैं कैसे नीचे आते हुए दिख रही है। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि दुबई में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आई है अबाउट drone attacks and a few small missile interceptions as well during this period of war with between ईरान, यूएस, इसराइल, तीनों चारों कंट्रीज के बीच में मार्केट जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी आज के डेट में, कल की डेट में थोड़ा सा गिरा है। बीटीसी ऑब्वियसली 2000 सॉरी 2000 कह रहा हूँ 74,000 तक गया था, टच करके वापस आया है। 72-73,000 मेंटेन कर रहा था, लेकिन अब फाइट है 70,000 के ऊपर मेंटेन करने की, और वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में आप देख सकते हैं रेड कैंडल्स जितनी भी है डोमिनेट कर रही है, ये सेलर्स को दिखाती है। लुक्स लाइक द सेलर्स आर डोमिनेटिंग। इसीलिए आज का टॉपिक भी यही है, क्या बीटीसी अभी भी एक बेरिश मार्केट में है। हमने देखा था कि ये देखिए क्या मैसिव मैसिव फॉल आता दिख रहा है बीटीसी में। लुक्स लाइक मुझे यहाँ पे अपने ट्रेड्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे एक बार, क्योंकि it looks like BTC is really finding it tough to maintain the 7,500 प्राइस मार्क, प्राइस एरिया। और अब यहाँ से अगर 70,000 के नीचे जाता है, अगेन चांसेस आर दैट इट कुड वेरी वेल गो टू द 65,000 मार्क येट अगेन। वो भी एक, वहां पर भी एक रेजिस्टेंस इसको मिलता है। लेकिन अब कल हमने, अच्छा बाय द वे, कल हमने बात करी थी कि मार्केट जो है वो 72,000 और 80,000 के बीच में, बिकॉज देर इज लेस सप्लाई, तो चांसेस हैं कि वहां पे तेजी से आपको एक चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। अभी 70,000 के आसपास आ चुका है ऑलरेडी।
Right. So welcome user 260841. Thank you for joining in again. So red candles dominating a lot, and we can see my PNL is going through a very rough phase at this point in time. Obviously, because BTC is, I expected it to have a bullish run. It has instead had a, very rough bearish run. फॉल आया मैसिवली. तो देखते हैं अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाता है. Losses are adding up, and that's why I need to be slightly more cautious when it comes to trades.
uh, hoping that these trades get into some kind of profit in the next couple of minutes, because it's getting tougher and tougher, because seeing the market in such a bearish phase, it gets really difficult to take care of your trades as well. User 111086, thank you for joining in from Indonesia. And I hope that you are also making some kind of trades on zbit.com. The market, it looks like, is falling down from where it was when I joined this live stream. It has come down. BTC was, till the 7,800 mark, 70,800 mark, and now it did go to the 71,000 mark just as I joined in, but it has come crashing down to 70,300s, and it could very well go down as well from here, right? So if there is a genuine, confirmed, breakout towards, below 70,000, it could very well mean that we are heading again towards the 65,000 mark as well. But if that doesn't happen, it looks to maintain 70,000. It could very well again go to 72,000 as well. But it is a game of patience. You'll have to wait and see where this market progresses towards, and only then we'll have a clear cut idea as to where this market looks like it's heading in the next couple of days or weeks, right? On that note, I'll also look at what all is happening in the Iran-US war as well. It's obviously occupying a lot of attention, getting a lot of criticism as well. People all over the world are looking for this war to settle down, because it is creating a lot of trouble, inconvenience for the airlines, for the airspaces as well that are restricted. Apart from that, flight cancellations are being done. Loss of lives is obviously one of the biggest factors associated with a war. That is, at the center of it all. Apart from that, बहुत सारे लोगों को inconvenience आ रहा है. Offices have been closed, schools have been shut. We also did read news about a bomb strike on a school in Iran, where it was a girls' elementary school, and a missile struck that, and a lot of kids also lost their lives. A lot of people are also being displaced, whether it is in Iran, whether it is in Israel, whether it is in Lebanon as well, with which Israel is also having a war. Israel is not just fighting one war; it's also in a war with लेबनान एज वेल. एंड लेबनान में भी काफ़ी सारे लोगों को मोबिलाइज करना पड़ रहा है, इधर से उधर डिस्प्लेस करना पड़ रहा है. बहुत बहुत दिक्कतें इसलिए आ रही हैं. Israeli media says Ben Gurion airport hit. Iranian missile hit Israel's Ben Gurion airport. Again, a devastating blow it could be for Israel.
यूजर 452767, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। क्या हाल है? क्या लग रहा है बीटीसी कहाँ तक गिरेगा? लगातार हम इस ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, लगातार हम बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रेड्स मैंने सेट करे हैं, मार्केट नीचे ही चली गई जहाँ से मैंने ट्रेड सेट करे थे, और मुझे लग रहा था कि ऊपर जा सकती है। आई वॉज रॉन्ग हियर एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एडमिट दैट। So hoping that this loss is covered up in the next few minutes as well. If not, I will look to make some more trades as well during my live stream. आपको क्या लगता है बीटीसी कितना और गिरेगा? क्या 70,000 के नीचे आएगा या नहीं आएगा? बस जितना गिरना था गिर चुका है, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्या लगता है आपको? Right, I think it's time for me to close these trades out. I have a very big loss when it comes to BTC, Ethereum as well.
Right. Right. Now that I've gone short again, the market looks like it's finding some stability, and I'm again in a $1-2 loss because of BTC again. बट ट्रेड्स तो करने हैं, आप लोग आते हैं हमारे यहाँ पे zbit.com लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको ट्रेड्स करके दिखाऊं, बताऊं, जो भी ट्रेड्स मैं ले सकता हूं मैं लेता हूं। पर कई बार ट्रेड्स के पीछे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी टेक ट्रेड्स टू मोटिवेट यू टू मेक मोर ट्रेड्स। कोई शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल होता है तो आई डेफिनेटली शेयर ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। जिन जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बॉटम पे ऑप्शन है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, मोर दबाओगे तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर लेटेस्ट सिग्नल्स ट्रेड्स शेयर करता हूं जितने कर सकता हूं, साथ ही साथ कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, अनाउंसमेंट्स, रिवॉर्ड्स सब शेयर करता हूं वहीं पे। तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना, नहीं करा तो आपका ही लॉस है इवेंचुअली। फाइनली $2 का प्रॉफिट होता हुआ, बीटीसी फिर भी नेगेटिव में ही है। क्लोज करके बीटीसी का ट्रेड क्लोज करके
Finally, some kind of respite for BTC. I've incurred a big loss, but I'm looking to make amends now. Welcome to user 925632, all the way from the Falkland Islands, and user 210693 from India as well. Thank you for joining in. Thank you for joining in user 925632 as well. Welcome to the live stream. बहुत बहुत स्वागत है. बीटीसी को ट्रैक कर रहे हैं. काफी रोलर कोस्टर पीरियड रहा है इसका. और एक सेकेंड आप मुझे दीजिए यहाँ पे. आई जस्ट सॉर्ट दिस इशू आउट वंस. राइट. काफी रोलर कोस्टर पीरियड रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, लास्ट कपल ऑफ आवर्स टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट इन लास्ट 2 आवर्स. 71,000 को टच करके नीचे आया है, अब दोबारा बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन the question remains, it is finding it really tough to maintain itself above the 70,000 barrier, and a fall from here could very well mean that 65,000 में भी जा सकता है. दोबारा नहीं जाता, अगर 72,000 की तरफ जाता है तो 72 से 80,000 जाने में भी टाइम नहीं लगेगा. लेकिन अगेन इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, इट्स अ स्लो प्रोसेस. एंड आप देख सकते हैं ये रेड 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 देखने को मिला था यहाँ पर सारे कैंडल्स इतनी देर में. अब फाइनली कुछ ग्रीन कैंडल्स आए हैं, टेक ओवर कर रहे हैं. यही टाइम है ईटीएच में भी. आई लुक टू मेक सम काइंड ऑफ अमेंड्स एंड ओपन लॉन्ग. लेट्स होप प्रॉफिट देखने को थोड़ा वहां भी मिलेगा, क्योंकि अगर बीटीसी बढ़ता है साथ ही साथ इथेरियम भी बढ़ता है. होपिंग दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिस्पाइट एंड सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन माय ट्रेड्स एज वेल. फाइनली देयर इज सम मूवमेंट अपवर्ड्स, राइट. Again, you see that the sentiment is not that strong when it comes to you know all these coins right now, because it's still looking like it's in a bearish phase, the market. मैंने 7368 पे एंट्री ली है, 7450 में चल रहा है, लेकिन अभी फिर से मैसिव फॉल आता दिख रहा है, ये देखिए आप. राइट. सो very much looks like the market is finding it difficult to maintain itself towards the 70,000, above the 70,000 price point. नीचे आता और दिख सकता है in the next couple of hours or so. बहुत डिफिकल्टी हो रही है मार्केट को अभी वहां मेंटेन करने में अपने आप को. एक क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था नीचे की तरफ बहुत देर से, 71,000 को टच करके फिर से 70,000, 71,000 से 70,300 200 तक गया. आप देख सकते हैं लास्ट 60 मिनट्स में जो यहाँ लोएस्ट गया है वो गया है 70,000 to 59 तक, which very well means that there is still some kind of stability that it is looking for in this price range. इसके बाद अगर ये बैरियर टूट जाता है नीचे जाएगा और बहुत भयंकर फॉल आ सकता है. फिर अभी भी फिलहाल नीचे ही आता दिख रहा है, लेकिन अभी स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ फाइट दैट द सेलर्स एंड बायर्स आर शोइंग फ्रॉम बोथ देयर एंड्स.
Thank you for joining in, Shubhangi. Welcome to the live stream again. Very precarious situation, very dangerous situation right now, whether you want to enter the market or not. It's a very, uncertain market at this point in time, and very volatile as well. So you should be wary of, making trades and be a little cautious. Don't, go with a lot of risk into any trade, and only then I think you can make good profits. Risky रहना, it could very well earn you good amounts of money, but it could very well make you earn, make you go through, incur a lot of losses as well. तो ध्यान रखना, आप जब भी ट्रेड लें, ट्रेड करें. I think you can enter Bitcoin right now. It's looking like it's going up in the next couple of minutes again towards that 71,000 mark again. So you can enter at a price of 70, 400, 450 if you want. नीचे भी जाता दिख सकता है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नीचे ज़्यादा जाएगा. आई थिंक आई क्लोज दिस ट्रेड आउट एंड ओपन शॉर्ट अगेन. शुभांगी जी, क्या लग रहा है, क्या आर यू गोइंग टू मेक a new trade, more trades in the next couple of minutes? I have entered at 74.50. I'm gonna watch. Yeah, it's very important that you keep a watch on it because the market is such right now. It's very difficult to predict at this point in time. Will not invest. Will. Why is that? Why are you not investing now? What happened? Did you make a loss? Looks like the market is again going up. And look, I think you and I will not make trades because it's very difficult to predict at this point in time. Better not to make trades than make bad ones, right?
I welcome user 937795 from Indonesia. We are today tracking the price क्या up और down जाएगा. इस वक्त बहुत प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है शिवांगी. Very difficult to predict at this point in time because
you can see how the market is responding, right? It's very difficult to predict. It's a volatile situation. There is a war going on. There is, of course, some kind of uncertainty जो market में बनी हुई है अभी, और बहुत fearful सी market होती है during periods of war. And any news, even rumors, wrong stuff, wrong news as well can take the market down as well, right? So it's a very precarious situation. Any trade that you do, you have to be very cautious. You have to be very sure. But since you are just making a wild prediction, आई थिंक कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जाएगा. 70,000 के नीचे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. आई फील लाइक इट कम टू प्रॉब्ली 68,000 समवेयर, 67,000 नीचे ज़्यादा दिख रहा है मुझे. बट अगेन आई एम नॉट दैट श्योर. आई डोंट नो. इसके बारे में अभी मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा. I have to be a little cautious. I can't make a wild prediction here. User 937795, have you made your first deposit on zBit.com from Indonesia? User 937795, have you made your first deposit on zBit.com? And she's left. इंडोनेशिया वाले लोग यार ज्वाइन करते हैं और चले जाते हैं, बड़े अजीब है. Anyway, war could bring down the economies of the world, Qatar's energy minister says. So true. Bahrain says it has destroyed 78 missiles, 143 drones during war. I would love to know, Shivangi, since you are joined, are you able to? Welcome, Prateek, to the live stream. सो वी आर ट्रैकिंग द ईरान. हैप्पी होली सर. बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं होली की. होली के दिन हमने देखा था कि बीटीसी जो है वो 70,000 के पार चला गया था. काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस मिल रहा था 70,000 वाले एरिया में, और उसके बाद इवेंचुअली इट कुड ब्रेक दैट बैरियर. एंड coincidentally I was there on my live at that point in time. I welcome user 608 570 from the beautiful country of Nigeria. Thank you for joining in. So I was telling that a day before yesterday, Bitcoin had crossed the 70,000 barrier finally. It had broken that resistance and gone on to not just break 70,000 but also 71,000 and 72,000, 73,000, and it touched 74,000 as well. And it came back then. It came back to 72,000, 73,000, was maintaining that position. सर कोई टिप्स बताओ. बिल्कुल बताऊंगा सर. और उसके बाद फिर अब 70,000 के आसपास अपने आप को मेंटेन कर रहा है बीटीसी. नाउ अ ब्रेक towards a point lesser than 70,000 could mean that the market could go towards the 65,000 barrier as well. 64-65,000 barrier नहीं तो अगर 72,000 की तरफ ये जाता है, ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर 72,000 से
80,000 तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा शायद, क्योंकि कल हमने इसके बारे में बात करी थी। वहां पर एक सप्लाई जो है वो कम है बिटवीन द 72,000 टू 80,000 प्राइस पॉइंट। सो इट कुड मीन दैट अगर 72,000 तक जाता है तो 72 से 80,000 तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। That is what experts are saying, that is what all I have been reading about. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग प्रतीक जी, हम ईरान यूएस वॉर पे भी ध्यान दे रहे हैं। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप has said that when there is a regime change in Iran, he wants to very much be a part of it, a part of the decision making as well. तो ये तो भाई प्रॉपर दादागिरी है जो चल रही है, प्रॉपर जिसे कहते हैं बुलिंग है जो चल रही है, फ्रॉम bullying from the side of the United States of America that wants to play an active role in the choosing of a supreme leader or leader in Iran. After having killed Ayatollah Khamenei, now Donald Trump wants to play his own cards and wants to be a part of the decision making process in bringing a new leader in Iran. Now, will Iranians accept that? Will an angry Iran, accept that? Because people are really angry at what has happened. They want to avenge the death of Ayatollah Khamenei. The actions of Trump have not gone down well with Iran, and now Donald Trump is saying that he wants to be, an active player in choosing the supreme leader in Iran, right? तो ये एक अलग ही लेवल की मतलब दादागिरी है जो चल रही है फ्रॉम द यूएस by the Israeli forces as well. And obviously जितनी लंबी ये वॉर चलेगी, it is going to definitely in a way directly or indirectly affect our cryptocurrency markets, right? BTC के prices को affect कर सकता है। BTC ही नहीं, crypto prices in general have been very fragile. The market has been fragile, the market has been very fearful, uncertain, and I don't know how it has gathered the courage to go past 70,000, because that was a barrier, that was a resistance that it was facing since a very long period of time. It hasn't had a good start to 2026 as well. January was bad, February was even more worse, right? And even during this period of war, I don't know how, somehow it has gathered the courage, the resurgence to go past 70,000, touch 74,000 and come back again. तो अब यहां से दोबारा मार्केट कहां जाएगा, ये हमें रोज ट्रैक करते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। मीनवाइल अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ है तो वहां पर लेटेस्ट सिग्नल शेयर करता हूँ, लेटेस्ट ट्रेड शेयर करता हूँ, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए बॉटम में ही आप देख सकते हो 3 डॉट है, मोर का ऑप्शन है, टैप ऑन इट, join my telegram group. It's by the name of zbit.com live with Karan. Please do join it. And if you are a new depositor, I have a very very good bonus offer for you as well, right? What is the bonus offer? I'll just let you know. You can get from my side 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free on your first deposit on zbit.com. The only trick here is you have to use the deposit option right below my live stream. राइट बॉटम पे आप एक डिपॉजिट ऑप्शन देख सकते हैं, उस पे टैप करके आप डिपॉजिट करोगे तभी मैं आपको ये डिपॉजिट ऑफर दे पाऊंगा अपनी तरफ से, ठीक है? दूसरी बात, $3 का मिनिमम आपको डिपॉजिट करना ही करना है। एक बहुत मिनिमम अमाउंट है मेरे हिसाब से, एक मिनिमल और एक रीजनेबल नॉमिनल अमाउंट है। $3 की डिपॉजिट आप करेंगे, मुझे बताएंगे कि कर दिया है, अपनी यूजर आईडी शेयर करेंगे, मैं अपनी सपोर्ट टीम से करूंगा, आपके अकाउंट में 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स अलोंग विद द डिपॉजिट दैट यू हैव मेड पहुंच जाएंगे। फ्री है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस डिपॉजिट करना है, वो भी छोटा अमाउंट है, $3 का ही करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो पहली बात, और दूसरा डिपॉजिट कर लो अगर डिपॉजिट नहीं करा है एक बार भी zbit.com पे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऑफर अभी चल रहा है, आगे चलेगा या नहीं चलेगा आई कांट से, बट व्हाट आई कैन से इज यू विल एनीवे मेक अ डिपॉजिट राइट नाउ और देन व्हेनेवर, राइट? एंड अभी चल रहा है ऑफर तो अभी इसको यूज कर लो। मान लो अगर $3 है, 300 रुपए अगर डालते हो तो आपको साथ में फ्री में शिबा इनू कॉइन्स मिलेंगे 20,000 या पेपे कॉइन मिलेंगे 20,000, ठीक है? तो प्लीज इसको यूज कर लेना।
प्रतीक जी, आपको क्या लगता है बीटीसी कहां तक जा सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? 17,612 पे अभी है, क्या लगता है कहां तक जाएगा? वेलकम यूजर 844961, बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे ब्रदर। उम्मीद करता हूं आपने पहला अपना डिपॉजिट कर लिया होगा zbit.com पे, नहीं करा है तो डिपॉजिट ऑप्शन मेरे ठीक नीचे है, उसको यूज करके कर सकते हो, साथ में डिपॉजिट ऑफर दे दूंगा। ठीक है, 80,000 तक जाएगा, कब तक जाएगा? अब कभी ना कभी तो सर जाएगा ही, आप 80,000 बोल रहे हैं तो बीटीसी टू द मून तो आपने लिख दिया, लेकिन ये तो आप हवाबाजी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। आप ये बताएं कि अभी मार्केट शॉर्ट टर्म पे क्या आपको लगता है, मार्केट 65,000 की तरफ जाएगा या 72-73,000 तक जाएगा? पहले आप ये बताइए, स्टार्ट शॉर्ट टर्म पे एक बार देखते हैं आपका क्या ओपिनियन है। यहाँ से मार्केट 65,000 पे जाती दिख रही है या 72-73,000 पे जाती दिख रही है? आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन बता चुका हूं ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम पे। मुझे लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ा नीचे जाएगा टुवर्ड्स द 65,000 64,000 ब्रैकेट एज वेल, इट कैन गो टुवर्ड्स, पर पहले अभी फिलहाल के लिए 68,000 तक मुझे जाता दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे ये जानना है, क्योंकि हम ईरान वॉर पर डिपेंड करता है। ओके, so the longer the war goes on, you think that the market will find it more difficult to go upwards, right? वरना जल्दी 80 के, या दैट्स व्हाट आई सेड, 72 और 80 के ब्रैकेट में अगर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी नीचे जाता है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस 70,000 बैरियर ऑल ओवर अगेन। ठीक है, 70,000 के नीचे गया, 70,000 के नीचे मतलब 68-67 तक अगर चला गया तो इट इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द 70,000 बैरियर अगेन। तब मुझे लगता है कि 64,000 65,000 तक जा सकता है। नहीं हुआ अगर ऐसा, अगर 70,000 के नीचे नहीं जाता तो 72-73 तक अगर जाता है तो 80,000 तक भी जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। राइट नाउ, वॉर वॉर के चलते ही, अच्छा बाय द वे 70,000 ये तब टच करा है जिस दिन वॉर सैटरडे को स्टार्ट हो गई थी। संडे को, मंडे को इवेंचुअली ग्रो करते करते ये 70,000 को क्रॉस करके गया है। तो क्या वॉर एक फैक्टर प्ले कर रही है या नहीं कर रही है, ये इस वक्त समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली अगर वॉर, अब जनरली देखो भाई, इस साल ऐसा देखा गया है कि बीटीसी ने उन पैटर्न्स को फॉलो नहीं करा है जिनको वो करती आई है। 52 वीक मूविंग एवरेज देखते हैं लोग और काफी सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, लेकिन बीटीसी ने जैसा अपना बिहेवियर दिखाया है तो इस हिसाब से तो वॉर के टाइम पे मार्केट को ऊपर भी नहीं जाना चाहिए था, राइट? लेकिन मार्केट ऊपर गई थी, राइट? 72,000 73,000 74,000 को भी टच करके आई है। तो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ वेदर दिस वॉर विल इवेंचुअली मीन दैट बीटीसी विल कम डाउन। हिस्टोरिकली देखा गया ऐसा, लेकिन इस बार ये पर्टिकुलर फेज में जब फरवरी 6 को क्रैश आया था तब से लेके अब तक जनवरी और फरवरी के ट्रेंड्स को देखा जाए अगर, BTC has not followed the patterns that it has so long followed, right? So we will have to continuously monitor and look at all the data as well as the current situation as well, right? I welcome user 490,927 to the live stream. बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप ईरान यूएस वॉर को फॉलो कर रहे हैं? हेलो हेलो, क्या हाल है? क्या लग रहा है आपको, बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ से क्या लगता है आपको?
यूजर 490927 क्या लगता है, बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या लगता है यहाँ से? Azerbaijan says it is withdrawing its diplomats from Iran. अब होगा। अच्छा, आपको लगता है ऊपर जाएगा? ओके, आई फील दैट इट विल गो डाउनवर्ड्स बिकॉज, बट अगर डाउनवर्ड चला गया तो आई थिंक इट्स गोइंग टू फाइंड ब्रेकिंग दिस 70,000 बैरियर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत टाइम से ये 70,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इट शुड नॉट गो डाउन, इट कांट गो डाउन, इट कांट अफोर्ड टू गो डाउन इन माई ओपिनियन. But if it does, it's going to be really tragic for all the people who've been so bullish on BTC, because again that whole process of 70,000 को टच करेगा, नीचे आएगा, ब्रेक करेगा बैरियर रेजिस्टेंस, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट फेज था वो। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से. चलो, आपने कहा ऊपर जाएगा तो मैंने भी एक ट्रेड ओपन कर दिया है ऊपर के लिए. मुझे लगता है ऊपर जाएगा तो देखते हैं, बट आई एम नॉट दैट श्योर टू बी ऑनेस्ट. लेट्स होप it does go upwards. If it does, we'll have a good profit to show. If it doesn't, if it comes down, we'll have some loss, right? As simple as that. Just about making the right, just about being on the right side of your prediction, right? Dubai crypto regulator says KuCoin exchange is operating without proper license and must stop. It's a Seychelles-based cryptocurrency exchange founded in China in 2017, is now the largest, one of the largest offshore crypto platforms, ranked in the top 10 by trading volume. I welcome user 527968 from India. खाक ऊपर जा रहा है वो. खराब ट्रेड दोबारा से मुझे लग रहा है. मैंने 660 पे एंटर करा है. ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जाता भी मुझे तो नहीं दिख रहा है. आई वुड रादर क्लोज दिस ट्रेड आउट.
So it's been a tough day in terms of trading because market hasn't moved that. I welcome user 993262 all the way from Senegal. Thank you for joining in all the way from Senegal. I'm sure it's a beautiful country in Africa, and I hope that you are keeping track of Bitcoin and other altcoins as well. You're also keeping track of the Iran US war because it is playing its part on this market as well, right? Welcome to the live stream from Senegal. Very nice to have you from Senegal. I'm sure it's a beautiful country. I wish I could travel there somewhere, right? Sometime. User 993262 is from Senegal, and I'm sure that I hope that you made your first deposit on zbit.com, because if you've not, there is this deposit offer running that you should definitely use, right? Do you want to know what the deposit offer is all about? If you're a first time, joinee on zbit.com, do you want to know about the deposit offer? User 993262 from Senegal. Kikish J from India. Welcome to the live stream. Even XAU has had a steep fall today, right?
If you see, after I gave that trade out, it's come back to 5082. मैं वहां पर 5115 पे था जब वो ट्रेड दिया था, और अब देखो 5082 पे आ गया है, तो स्टीप फॉल हुआ है काफी. All right, I'll take a short break here. I've been speaking since a very long time. It's been almost 3 hours on my live stream here. When I come back, there will still be 1 hour left on my live stream. I'll continue making trades. I'll continue talking about the Iran-US war and looking at the positions of BTC as well as other crypto news that will affect your trades as well. So stay tuned on zbit.com live with Karan. Do not go anywhere. I will be back in the next few minutes. Until then, do not go anywhere. Stay tuned. I will be right back.
Welcome back to zBit.com live with Karan. We are continuously monitoring the prices of two coins that I have traded in, not two, three, Ethereum, XRP and Link USDT. इनमें trades कुछ place करें. Welcome Prateek on the live stream. Welcome back, and also welcome back to user 605185 and user 251229 on the live stream. User 4909227 as well, who's been here since a very long time. Right now, we've been continuously following this war as well, all the things that are going on, especially when it comes to the United States of America, the Iran, Israel. Remember that Israel is not just in a war with Iran, it is also in a state of war with Lebanon, and its troops have been, continuously carrying out operations in Lebanon as well. So all these things you have to keep in mind when you are, reading about this situation between Israel, the United States. कल मैंने आपको जैसे कि बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि जब इसराइल अपना सुप्रीम लीडर चूज करेगा तो उनको भी इस डिसीजन मेकिंग में शामिल होना है. तो आई डोंट नो ये किस तरह की जोर जबरदस्ती है और ये सुपर पावर होने का क्या फायदा उठाया जा रहा है. और a lot of things about this war are actually very very confusing, because it looked like no US or इसराइल और सॉरी यूएस और ईरान के बीच में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे थे, मैंने आपको बताया था एक दिन कि ईरान मान गया था कि दे आर रेडी टू ब्रिंग देयर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल डाउन टू जीरो, देन कन्वर्टेड टू फ्यूल एज वेल, एंड मिनिमाइज इट, एंड इट, राइट. अपने सारे यूरेनियम सोर्सेस को वो खत्म करने के लिए मान गया था. नाउ दिस वाज अकॉर्डिंग टू person who was from Oman, who was directly involved in the negotiations as well. But I don't know what happened. We don't know what happened, that US had to actually pull the trigger on Israel, kill Khamenei as well, kill 48, 49 other top officials in Iran as well, break all international humanitarian laws and attack the supreme leader of Iran. प्रॉपर दादागिरी नहीं तो पता नहीं क्या है ये, राइट. अब कोई लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल ने परसुएड करा है यूएस को ये अटैक्स करने के लिए. कोई कह रहा है कि ये यूएस खुद ही करना चाह रहा था, एंड इट हैड टू बी दैट खमीनी हैड टू गो, राइट. और काफी लोगों का ये भी कहना है कि एक न्यूक्लियर स्टेट बनने से अगर उनको कोई रोक रहा था तो वो खमेनी ही थे. खमेनी को मार देने के बाद अब और भी चांसेस हैं कि वहां पर न्यूक्लियर साइट्स डेवलप जो हो रही हैं वो और होंगी. ऑब्वियसली अभी तक यूएस ने और इजरायली फोर्सेस ने जितने भी अटैक्स करे हैं न्यूक्लियर साइट जो है इजराइल ईरान की, दैट इज सेफ टिल नाउ. बट इफ सम काइंड ऑफ डैमेज इज इन्फ्लिक्टेड अपॉन दैट साइट, वी कुड वेरी वेल see that things could get really bad for the entire Middle East, entire world as well. Apart from that, मैंने आपसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में बात करी थी. एक और बार मैं आज आपको दिखा देता हूं. मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्यों इंपॉर्टेंट है इन दिस वॉर, बिकॉज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट. क्या फैक्टर है वो आज आपको मैं समझा देता हूं. एक बार आपको समझना जरूरी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ये ईरान के टेरिटोरियली ये वाटर्स कब्जे में रहते हैं, राइट. इट इज देयर एरिया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द 1/5 of the world's oil flows through this channel, right. एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ऑयल के, और ना जस्ट ऑयल के, साथ ही साथ नेचुरल गैस के भी यहीं से होके गुजरते हैं. तो ये सारी कंट्रीज जो आप देख रहे हो, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये सब का तेल जो है यहीं से होके गुजरता है. और ईरान ने ये कह दिया है कि हम यहाँ से अगर एक भी शिप गुजरती है तो हम उस पे
आग लगा देंगे, वील सेट इट अब्लेज, राइट। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि यूएस जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो नेवी है, ऑब्वियसली नेवी इस एरिया को पेट्रोल करेगी, कंट्रोल करेगी, और अगर कोई भी शिप देखेगी तो मारेगी, है ना। पर इसलिए यूएस जो है वो इस एरिया में नेवी के ऊपर अटैक्स कर रहा है, पोर्ट्स पे अटैक कर रहा है, ताकि ईरान इस एरिया को कंट्रोल ना कर पाए। और अभी हाल ही में हमने एक और न्यूज देखी थी कि श्रीलंका के कोस्ट के पास एक शिप जो है, वेसल जो थी, जो कि इंडिया से ही होके गई थी आफ्टर एन इवेंट इन इंडिया वेयर दे वर इनवाइटेड। देना करके नाम था, आई थिंक आयरिस देना करके नाम था उस शिप का। एंड उसको टॉर्पीडो से यूएस फोर्सेस ने, यूएस ने मार दिया था, कैप्साइज कर दिया था, और काफी लोगों के मिसिंग होने की खबर थी, मरने की खबर थी। श्रीलंकन अथॉरिटीज ऑब्वियसली वेंट इन एंड हेल्प्ड, a lot of people were saved as well, but a lot of people died as well. So इसीलिए the US is trying to attack the navy of Iran, and ऑब्वियसली अगर ये एरिया आप समझ सकते हैं, अगर ऑयल का आना जाना इफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट्स अगर इफेक्ट होंगे, तो अगेन सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और प्राइस राइज हो सकता है इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना एज वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सऊदी अरेबिया एज वेल। ये सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जितने भी करते हैं, they will be heavily affected, right? So this Strait of Hormuz is very important in this war, and 1/5 of the countries of the world's oil flows through this area, right? सबसे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ओपेक मेंबर्स जो हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, मोस्ट export most of their crude oil via the Strait of Hormuz, mainly to Asia, ठीक है। कतर among the world's biggest liquefied natural gas exporters, नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो कतर से हो रहा है, among the world's biggest है वो, इसी इसी स्ट्रेट से भेजता है वो भी। तो ऐसे में इस स्ट्रेट पे जितने भी तनाव बन रहा है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है, it all comes down to this area, this trade passage. So unless and until this issue is solved, you can expect that market में imports और exports को लेके, especially of natural gas and that of oil will be affected, right? तो ये तो मैं आपको पहले ये भी बता चुका हूं। लेटेस्ट जो भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ईरान कंसर्न्ड अटैक्स इन नॉर्थ वेस्ट एम्ड एट क्रिएटिंग वैक्यूम फॉर रेबल फाइटर्स, ऑब्वियसली हिजबुल्ला वगैरह जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव गॉट इवन मोर एंग्रियर एंड मोर काफी ज्यादा रिजॉल्व के साथ अब वो इस फाइट को देख रही हैं। हेट्रेड जो था, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1970s में, 1979 के आसपास, तब बहुत लोगों ने ये देखा नहीं था, और लोगों के अंदर, आप लोगों ने अगर एक पिक्चर देखी हो, बाय द वे, आर्गो नाम है जिसका, राइट, इट्स एन ऑस्कर विनिंग मूवी। उसमें दिखाया गया है कि कैसे यूएस के लोगों को हॉस्टेज भी बना के रख लिया गया था, और ऑलमोस्ट शूट एट साइट के ऑर्डर्स थे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा अगली रिलेशंस हो गए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, इस्लामिक रेवोल्यूशन टाइम की बात है। और आप ये मूवी जरूर देखें, आपको समझ आएगा थोड़ा कि क्या कितना हेट्रेड था अमंग इरानियंस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन्स के लिए। और साथ ही साथ अब वो अब आप समझ सकते हैं कि अब खमेनी की डेथ के बाद, ऑब्वियसली ही वाज सच अ फॉलोड लीडर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन ईरान, इवन इन इंडिया, आप देख सकते थे लखनऊ में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और मार्चेस हुए अभी खमेनी को लेके, कश्मीर में भी देखने को मिले, पाकिस्तान में देखने को मिले, कराची में देखने को मिले, हर जगह देखने को मिले। और ही वॉज अ वेरी फॉलोड रिलीजियस लीडर, एंड ऐसा जब किसी की डेथ होती है, तो अब आप समझ सकते हो कि इवन दिस जनरेशन ऑफ
Iranians would have seen, मतलब पहले उनको नहीं समझ आता होगा इस्लामिक रेवोल्यूशन जब हुआ था कि क्यों इतना हेट्रेड है हमारी कंट्री में यूएस को लेके, अमेरिकन को लेके, लेकिन इस जनरेशन ने अब दोबारा देख लिया है. सो आई फील लाइक दैट हेट्रेड इज गोइंग टू गो टू almost a new level, right? There might be even the formation of even newer terrorist organizations, even newer groups that are ready to take the revenge for the killing of Khamenei and attacking Iran, right? अच्छा, ये एक साइड ऑफ द डिबेट है. द सेकंड साइड ऑफ द डिबेट इज ऑब्वियसली द फैक्ट दैट इजराइल ये मानता है कि हिजबुल्ला और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पर फॉर्म हो रहे हैं, इवन हमास, इन सब का फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ईरान का रोल रहा है. दे हैव प्रोबेबली प्रोवाइडेड वेपन्स और सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा रीजनल इंस्टेबिलिटी आ रही है, ऐसा इजराइल का मानना है. नाउ इजराइल हैज ऑब्वियसली वांटेड टू get the support of the United States of America as well. उन्होंने ले लिया, वहां पर मिस्टर ट्रम्प बैठे ही हुए हैं, उन्होंने भी ट्रिगर पुल कर दिया एंड ये वॉर छिड़ गई, राइट? अब ये वॉर कितनी लंबी छिड़ेगी ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन it has obviously given rise to, मतलब I really feel that it was a very avoidable war, to be honest. And I feel like now a lot of you might say that all wars are avoidable, right? But मैं आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आपको समझ आएगा कि ईरान हैड अग्रीड टू न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अपना कम करने के लिए ईरान मान गया था. ओमान के एक बंदे ने, ये देखिए, ये दिस वाज 6 days back. It's so disheartening to see that peace was not given a chance and ये वॉर इवेंचुअली हो गई. बट अब ये आर्टिकल पढ़ो, आपको समझ आएगा. ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये, बद्र बिन हमाद अल बुसैदी, इन्होंने कहा है कि अब एक बार मैं इसको पढ़ के बताऊंगा इन्होंने एग्जैक्टली क्या कोट करा है. इफ द अल्टीमेट, अब पहले यहां से पढ़ूंगा. अ पीस डील इज विद इन आवर रीच इफ वी जस्ट अलाउ डिप्लोमेसी द स्पेस इट नीड्स टू बी देयर, इट नीड्स टू गेट देयर. If the ultimate objective is to ensure forever that Iran cannot have a nuclear bomb, I think we have cracked the problem through these negotiations by agreeing a very important breakthrough that has never been achieved any time before. ठीक है? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have nuclear material and that will create a bomb. Now we are talking about zero stockpiling, and that is very, very important, because if you cannot stockpile material that is enriched, then there is no way that you can actually create a bomb. There would also be full and comprehensive verification by the IAEA, International Atomic Energy Agency, referring to the UN's nuclear watchdog. तो बेसिकली एक लास्ट ही पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा. Oman's top diplomat also said Iran would degrade its current stockpiles of nuclear material to the lowest level possible so that it is converted into fuel, and that fuel will be irreversible. This is something completely new. It really makes the enrichment argument less relevant because now we are talking about zero stockpiling. अब मुझे बताइए, इन्होंने ये कहा है कि I believe Iran is open to discuss everything. अब मुझे ये बताइए, जब ये सारी बातें हो चुकी थी तो ये वॉर पे जाने का फैसला क्यों लिया गया, राइट? आप देखें कि ओमान जो है, ओमान वाज इन्वॉल्व्ड इन द नेगोशिएशंस, इन द डील, इन द डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द 2-3 नेशंस, राइट? ये जो टॉक्स हुई थी ये भी ओमान में हुई थी पहली बात. उसके बाद ये टॉक्स जेनेवा में भी हुई थी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है? क्योंकि एक न्यूट्रल कंट्री में ये सारे टॉक्स होना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हुई थी. और जब ये हो गया था तो क्या जरूरत थी ये वॉर को इनिशिएट करने की? ऑब्वियसली, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हैं. ही डिडंट look back once of what the consequences of this war could be, how much inconvenience people would have to go through, how many lives would be lost. अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पे अटैक कर दिया गया था. आई मीन,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा अवॉइडेबल थी ये वॉर। एंड जो अग्रेसर है यहाँ पे, ऑब्वियसली इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजरायली फोर्सेस एज वेल, राइट। अब अगर आप किसी पे अटैक कर दोगे तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। आपने उनके सुप्रीम लीडर को मार गिराया है, and it has taken things to a whole new level, right? So the Iran US war could have been very much avoided. Now Trump will also be getting a lot of criticism in his own country, but you know अभी हाल ही में वोटिंग भी हुई थी, उनको उनके सपोर्ट में आ गया वो, पता नहीं कैसे 53-47 के वोट से a lot of the Senate had voted, and उन्होंने ये कहा है कि they are happy that 53% have voted in favor of this attack on Iran. I don't know if how many Americans would agree with this. Senate agree कर गया तो ठीक है, या वो भी 57-47 से ही करा है, 53-47 से, लेकिन लॉट ऑफ अमेरिकन भी आई डोंट थिंक मानेंगे कि ये वॉर जो है वो उनको एस्केलेट करनी चाहिए थी, अवॉइडेबल थी। अमेरिकन डू नॉट वांट टू सी any more wars. They've seen what has happened in Iraq. They've seen what has happened with Afghanistan. They've seen what has happened with Venezuela as well in the recent last few months, right? And with Trump at the helm, it's becoming all the more difficult. वो इतने aggressive actions ले लेते हैं, और it just feels like consequences के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता है, rather than एक्शन लेने पे ही ध्यान दिया जाता है, बस कि एक्शन ले लो देखा जाएगा, ऐसा 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 लगता है। Obviously USA is a very powerful country. They have all the troops there, they have all the weaponry with them, they have all the ammunitions, they have all their vessels as well. They can completely demolish Iran if they want, but will that bring peace in the world, or will it bring more hatred in the world for the Americans, right? That is again a question that we all can be asking America, right? अब ये सारी चीजें एक तरफ हैं, उसके बाद आती है हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। मार्केट ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल थी जब ये वॉर छिड़ने वाली थी, ठीक है। 70,000 के बैरियर पर बीरे छू ही नहीं पा रहा था बीटीसी, और अब किसी तरह उसने छुआ है 72,000, 73,000, 74,000 भी टच करके आया, लेकिन इट हैज कम बैक, राइट। एक बुलिश फेज में मार्केट को जाने के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। प्रोबेबली इफ ट्रम्प सेज दैट दिस वॉर इज ओवर फ्रॉम आवर साइड, वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू अचीव, देन मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ी और स्टेबिलिटी आएगी, और थोड़ा बुलिश नेचर एक्सपेक्ट कर सकते हो बीटीसी का। वरना तब तक ऐसा ही रहेगा, बीटीसी विल लुक टू मेंटेन इटसेल्फ, स्टेबलाइज इटसेल्फ, और अगर काफी टाइम तक एक पोजीशन पे स्टेबलाइज करते हैं तो फिर वहां से चांसेस बढ़ जाते हैं। 70,000 के नीचे जाएगी ऑब्वियसली तो 64-65,000 पे भी आ सकती है। तो इसको हम लगातार फॉलो करते हैं हमारे लाइव स्ट्रीम पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा शॉर्ट एक क्रिस्प वॉर के बारे में समरी पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो भी बताइए, कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। प्रतीक जी, आप बहुत देर से आए हमारे साथ, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो कर लो। डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है, डिपॉजिट ऑफर भी ले लो। डिपॉजिट ऑप्शन के लिए डिपॉजिट ऑप्शन ठीक मेरे नीचे है। डिपॉजिट करना चाहते हो तो मेरी तरफ से 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे आपके पहले डिपॉजिट पे। तो अगर नहीं लिया है तो डेफिनेटली ले लो इसको और डिपॉजिट कर लो। जरूरी नहीं है ऑफर लंबे टाइम तक चलेगा, जब तक चल रहा है इसका फायदा उठा लो आप। कुछ ट्रेड्स प्लेस करे हुए हैं,
एक दो डॉलर के लॉस में चल रहे हैं। और सारे ही नीचे चल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। ऊपर जाते ही आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा यहाँ पे। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस जॉब रिपोर्ट्स ड्यू एट 1:30 यूटीसी बाय द वे। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात होने वाली है। ऑयल प्राइसेस हाई जाते जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों का कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे। आप लाइव स्ट्रीम पे बने हुए हैं काफ़ी देर से, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल पूछना चाहें तो। It's very disheartening to also read the fact that US and Iranian sides were expected to meet again on Monday in Vienna, Australia. और उससे ही पहले ये वॉर छिड़ गई। जब नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो तब ऐसे में अटैक करने का क्या तुक बनता है, मुझे नहीं समझ आया। दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड द यूएस, although it might be the most powerful country in the world, it should definitely pay a price for what they have done. It is just utter disregard for the international laws in the world that have been there since such a long period of time, and utter disregard for you know एक होता है ना कि डिसरिस्पेक्ट है एक तरह से ये, कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं और आपने ट्रिगर पुल कर दिया। इट इज जस्ट, it's abnormal in my view। It's see,
This is just before the war, one day before the war. Iran agrees to never ever have nuclear bomb material, says Oman finance minister, who was actually foreign minister, who was actually a person within the diplomatic talks. He was there, negotiator की तरह काम कर रहे थे ये. और ईरान ये भी मान गया था कि ये जो IAEA जो वेरिफिकेशन के लिए, यानी यूएन अपनी एक टीम भेजता और एटॉमिक एनर्जी वाली ये जो इनकी टीम है, और वो चेक करते, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आती, चेक करते कि फुल्ली और कॉम्प्रिहेंसिवली वेरिफिकेशन होता, और वो चेक करते कि क्या इन्होंने अपनी स्टॉक पाइलिंग जीरो पे कर दी है या नहीं करी है. बट अगेन, probably this war was written and it was meant to happen, but it was very much in, it is very much the fault of the United States of America and Donald Trump in particular, who is responsible for the killing of so many people, so many, you know kids as well. What a loss of, so much money, infrastructure, lives, families. Very disheartening, just because of one person. Do that special. Cuba, he's waiting, but he says, let's get this one finished first. We could do them all at the same time, but bad things happen. If you watch countries over the years, you do them all too fast, bad things happen. We're not going to let anything bad happen to this country. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. As well as proud Miami sports fan, Secretary of State. I'm telling you, he's going to go down as the best Secretary of State in the country's history. अब बात हो रही है नेक्स्ट, जो है यूनाइटेड स्टेट्स शायद क्यूबा पे भी कर सकता है अटैक. क्यूबा कह रहे हैं कि अभी ये पहले हो जाए, फिर उसके बाद क्यूबा को देखते हैं. ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं. ऐसी तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रोबेबली असाइनमेंट्स हैं इनके, ये जैसे कंप्लीट करते करते जा रहे हैं, वॉर करवा दे रहे हैं कंट्रीज में, लड़ाई कर रहे हैं, मार दे रहे हैं लोगों को. एंड इज जस्ट गोइंग अक्रॉस ऑल ऑफ दिस एज इफ इट्स just an assignment, one more assignment completed, tick mark, one more assignment completed, tick mark. I mean, and why does US have a habit of, you know interfering in the operations and interfering in the, you know matters of other countries? I just don't get it. So it does look like BTC is finding the courage back again up, to go back again up. 7600 के आसपास पहुंच गया है as we come to the close of this live streaming session. एंड फटाफट मैंने एंटर कर दिया तो मेरे को $5 का प्रॉफिट भी दिखाई दे गया है. थोड़ा नीचे आता दिख रहा है अभी दोबारा, लेकिन द मार्केट सेंटिमेंट राइट नाउ, इट लुक्स वेरी मच एज इफ इट्स गोइंग फास्ट अप. This is obviously the 1 minute chart that we are looking at. And it's been a testing phase for BTC also. काफ़ी ज़्यादा volatile रही है market इस period में. BTC has not had a easy road. It's been a tough road.
अगर आप लोगों के कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। हम लाइव स्ट्रीम के एंड की तरफ आ गए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी व्हेन इट कम्स टू यूएस ईरान वॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट बीटीसी और बेरिश मार्केट है अभी जिस तरह का वो, और साथ ही साथ अदर क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़। मैंने आपको कुकॉइन के बारे में बताया विच इज़ अगेन अ क्रिप्टो एक्सचेंज दैट इज़ अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डाउट एंड शैडोज, तो उसके बारे में बताया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बताया, ईरान यूएस वॉर के बारे में बताया, कहाँ ये वॉर रुक सकती थी, शायद होती ही नहीं, वो उसके पीछे रीजंस बताए। तो आपको अगर कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं मुझसे लाइव स्ट्रीम पे। अब मेरे लास्ट ही कुछ मिनट्स रह गए हैं। जिसको जो भी सवाल पूछना है, प्रतीक जी हमारे साथ काफ़ी देर तक से बने हुए हैं, आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आए हो तो कमेंट करके ज़रूर जाइए। कमेंट ही नहीं, डिपॉजिट कर सकते हो तो डिपॉजिट भी करिए। डिपॉजिट ऑफर का पूरा फ़ायदा उठाइए। आप लोग लाइव स्ट्रीम पे काफ़ी देर से बने हुए हैं। यूज़र 490927 प्रतीक जी, और साथ साथ 605185 और 251229। थैंक यू मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे इतनी देर के लिए बने रहने के लिए। आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। Any questions that you want to ask, you can go ahead and ask me. ये जा नहीं रहा है मेरी तरफ से।
एनी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं मेरे से लाइव पे. Last few minutes of my live stream. If you have any questions, please go ahead and ask me. Pratik, any more questions that you have? Do you want to ask any question? We are coming towards the close of our live segment. Did you like the topic of the day? Did you understand why we it feels like BTC जो है वो अभी भी एक bearish market में है? Any questions? कोई भी सवाल है आए हो तो कमेंट जरूर करके जाइए सर. अगर डिपॉजिट नहीं करा है तो कमेंट जरूर करिए. कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं. लास्ट के 5-7 मिनट रह गए मेरे लाइव स्ट्रीम पे. उसके बाद मैं आपको कल दोबारा मिलूंगा. लेकिन कल मैं आपको मिलूंगा 5:30 से लेके 9:30 बजे के बीच में. और यही मेरा लाइव का स्लॉट रहेगा. कल एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा. नए क्वेरीज लेके आऊंगा. नए आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. होपफुली इस वॉर में भी कुछ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी. चीज़ें बेहतर होंगी उम्मीद करता हूँ. और बीटीसी में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा. उम्मीद करता हूँ मार्केट अपवर्ड्स ही जाए यहाँ से क्योंकि बहुत नीचे रह लिया यार ऐसा लगता है. क्या क्या मार्केट दोबारा नीचे जाएगा 74,000 की 64,000 की तरफ 65,000 की तरफ या मार्केट 74,000 72,000 की तरफ बढ़ता दिखेगा. कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कॉन्स्टेंटली ट्रैक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे करता हूँ. मैं आपको बताता रहता हूँ कब आप ट्रेड ले सकते हो, कब आपको लेना चाहिए ट्रेड, नहीं लेना चाहिए, सब बताता हूँ. तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप मिस आउट कर रहे हो काफी सारा कंटेंट, काफी सारे अच्छे ट्रेड्स, राइट.
Huge implications of a war. Right. लाइव स्ट्रीम के एंड की तरफ अब हम आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, और कल भी जब मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा तो अनाउंस कर देता हूँ ग्रुप में ऑलरेडी कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ ट्रेड्स भी करते हैं हम, वो भी करें, आज आगे भी करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि कल भी आप लोग ज्वाइन करेंगे लाइव स्ट्रीम को। तो आप लोग ज्वाइन करते हैं, बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आए हो तो कमेंट भी करोगे, डिपॉजिट भी करोगे, कुछ ना कुछ आपकी बातों की वजह से मुझे भी सीखने को मिलता है, और मेरे को भी आप लोगों का पर्सपेक्टिव पता चलता है कि लोग कैसे सोच रहे हैं, राइट, इस वॉर के बारे में, इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक और रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लो अगर नहीं करा है। अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से आप बोल सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। ट्रेड सिग्नल्स वहाँ वहीं पर शेयर करता हूँ सारे, और उन ट्रेड सिग्नल्स को यूज़ करके आप प्रॉफिट्स बना सकते हो। ठीक है, तो कल दोबारा मिलेंगे। 5:30 से लेके 9:30 बजे तक का टाइम रहेगा, ज्वाइन करना मत भूलना, शाम को IST। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूंगा। जो लोग यूट्यूब पे बने रहे थे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन on my live stream. I will see you all tomorrow at 5:30 to 9:30 IST. And till then, please keep investing, depositing, and trading only on zbit.com, one of the most safest and secure crypto exchange platforms in the world, right? So please join kar liya hai. Thank you for coming in, thank you for joining in, thank you for depositing today, all those people who have deposited, thank you for commenting as well. I will take a leave now. I will see you all tomorrow at 5:30 to 9:30 IST with a newer topic about cryptocurrency, about the Iran US war, maybe. We'll see, right? And I'll see you all tomorrow. It was great having all of you here. Thank you for joining in. My name is Karan, and I am taking a leave now. Goodbye and take care. Also, a reminder, Yash will be here in the next half an hour. So do join in on his live stream as well. And he'll be here to answer your queries and bring a new topic with him as well, right? I'll see you all tomorrow at 5:30 p.m. IST. Goodbye and take care.